One. Good morning everyone assembled here. I am Priya Singh, student of BBA AQ 6th semester, standing in front of you all to give a presentation on the topic check bounce. So firstly I would like to thank Sidhu sir for giving me this opportunity. So the check bounce. So basically when there is an insufficient amount in the bank of the drawer, in this case basically check bounce happens. So in this there are three elements which are involved. First one is drawer, drawing and the pay. Drawer is the person who issues the check, pay is the person who receives the amount, and drawing plays the role in between. Basically they are the banks. So the reason for check bounce are like when signature don't get tally, when there is overwriting in the check, or when there is an insufficient amount in the bank of the drawer. So basically in this what happens, जो पे को चेक मिला है एंड ड्रॉर के अमाउंट में उतना पैसा जब नहीं होता तो उस टाइम पे के पास ये अपॉर्चुनिटी होता है कि वो जाकर के ड्रॉर के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है. एंड इन दिस केस बैंक इशूज अ मेमो ऑफ 15 days एंड उस डे के अंदर में ड्रॉर को वो अमाउंट पे को देना होता है. एंड अगर वो अमाउंट उतने दिन के अंदर उनको नहीं देता है सो ड्रॉर हैज द डेट विदिन 30 days पे के पास ये राइट होता है कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाकर के अपना केस फाइल करवा सकता है. एंड केस फाइल कराने के बेसिकली दो एक्ट्स है. फर्स्ट वन इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 138 एंड द सेकंड इज इंडियन पेनल कोड अंडर सेक्शन 406 एंड 420. In negotiable instrument act under section 138, in this if the draw मतलब पे को पैसा नहीं मिल रहा है, so in this the drawer will get 2 years of imprisonment and fine and or both. And in this under section, this is the case of trust switching, and in this there will be a 3 years of imprisonment or fine or both. And in under section 420, this is a case of cheating, and in this there will be an imprisonment of 7 years, fine or both. So that's all from my side. Thank you. Have a nice day.